तो यार आप सभी का स्वागत है It's गॉड ऑफ strange. रैग्नारॉक के। There are still signs of the world serpent all over the lake. But we saw him disappear at Ragnarok. That can only mean the legend was true all along. That blow from Thor sent Jormungandr straight back in time. A younger Jormi, fresh from Jotunheim, who would grow into the serpent we know. When we first met the snake, you said that he found Atreus familiar. Perhaps they met in Jotunheim. Perhaps so, brother. We'll have to ask the lad for that story when we next see him. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखते क्या क्या करेंगे। अब फ्रेया का आर्मर है एक, फेट ब्रेकर ट्यूनिक, यही ठीक है। स्किल्स फ्रेया, बस एक बचा है हमारा। उसके लिए हमें चाहिए अराउंड 3000। मुझे जानना है हम फेट से वापस बातचीत कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फेट से अलग हुआ थोड़ा बहुत अब। और अगर मैप के हिसाब से देखें, रेमनेंट्स ऑफ एसगार्ड, यहाँ पे क्या क्या बचा है? बर्सर्कर ग्रेवस्टोन, 2 रेमनेंट्स ऑफ एसगार्ड और एक अनडिस्कवर्ड। हाँ, अभी भी एक अनडिस्कवर्ड बचा है यहाँ पे। स्वाटलफाइम, बर्सर्कर ग्रेवस्टोन, 3 रेमनेंट्स ऑफ एसगार्ड और एक अनडिस्कवर्ड। गोल्स अनडिस्कवर्ड। अच्छा हाँ, मुझे याद है अनडिस्कवर्ड क्या अनडिस्कवर्ड है। पहले एक Mimir, काम there's करते हैं। something I wanted to ask you about. Hildisvini told me about your visit to secure Hel's army, but was reluctant to elaborate when it came to negotiating with Frostfinger. Ah, yes. Well, I can see why he'd hold off on such a subject until he saw if we survived the battle. Mimir, what exactly did you promise the large bird? Oh, nothing too horrifying. It's just that she'd like to retire. Retire? Hel's eagle wants to retire? Indeed. And don't ask me what she expects to do with her free time. I assure you there is no reassuring answer. Can she even do that? Not be Hel? Apparently so. She just requires relief. Someone else to step in and become hell, as it were. Not exactly an office many would wish to occupy. Aye. Terrible weather, infinite hours, and the possibility of unleashing terrible mischief on the realms if they're careless. Or worse, if they aren't completely trustworthy. But if she were to leave without a replacement? Complete chaos, yes. Well, I'm sorry I asked. तो मिमिर करेगा ये हेल्डिस में नहीं करेगा ये काम। खैर जो भी हो, अब एक बार मुझे रैटाटॉस्कर से बातचीत करनी है। When Jormungandr attacked Thor in Asgard, it seemed personal somehow. But there's no way they could have met before that, is there? I've been pondering that, and I have a theory. We know the lad spent his time in Jotunheim learning soul magic. Perhaps the serpent figured in. You mean Atreus placed some other giant soul into him? Someone who already hated Thor to begin with? Exactly! Though that doesn't narrow it down much, I grant you. I wonder if Jorm even remembers after all this time who he once was. You! Come with the child! Things to do. Yes, yes, it's me. Hello, Ratatoskr. Hello, Master Kratos. What you've accomplished for these realms is truly something I never thought possible. Rest assured, good Master Brok would be proud beyond measure, even if only to express it in his love language of profane non-sequiturs. But he is terribly missed. Yes, he is. Now, there is one rather interesting development to apprise you of. The detonation of Asgard shook the world tree to its very roots, dislodging a great number of realm seeds. I thought you might wish to have them. My little way of saying, thank you for preventing my death by immolation. You are welcome.
Anyhow, was there something else you wish to talk about? ठीक है, सो अब ये बढ़िया सीन है. Go on. I understand if what I'm about to say may come across as facetious or self-serving, but I wanted you to know that I truly, from the bottom of my heart, appreciate everything you have done for both myself and my tree. Thank you. You are welcome. What is most difficult to accept about myself are my limitations. Show some pride! Whether they be my physical limitations, my size, my confinement to this tree, or my emotional limitations, of which you have had to deal with far too many times. Too many words. They plagued me, and as a result, I envied someone like you, Master Kratos. No, I feel so But now I stupid. realize that even someone as seemingly all-powerful as you does not lack limitations, but instead, like the rest of us, has to work hard to surpass them. Oh, enough already! You're gonna bore him to death! Forgive my rambling. In short, you have taught me a lot, Master Kratos, and I thank you. You are welcome in my tree anytime as an honored guest. Very well, then. I suppose I needn't to take up more of your time. Away with you already! Master Kratos, this feels very uncharacteristic of you, but if you enjoy the pretty chimes ठीक that है, much, I will allow you to indulge. यहाँ देखते हैं अंदर क्या है. Hi, Kratos. What is wrong? No, nothing. It's just, don't know if you've heard, but we're gonna say goodbye to Brok in Svartalfheim. A funeral. Yeah. We're meeting at Rab's Tavern in Niflheim. We will be there. Hell of a job you did at Ragnarok, General. Wish I could have been there to see you and Sindri take down Thor and Odin. That is not what happened. Yeah, maybe not, but it's the story I like best. Important thing is, Odin's paid in full for what he did to Brok. I know it doesn't fix what's broke, but it ain't nothing. Now, I know it's hard being here without them, but I'm sure old Brok would be glad you're here. And I'm sure Sindri, wherever he is, would appreciate you tidying up after yourself. Now go ahead. ओके, अब देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है. स्वॉर्ड, And what about Freya? नाइस. Impressive. ठीक है. और अभी ये क्या है? हुल्ड्रा प्रोजेक्ट 9. Turn Mimir's discomfort into a Bifrost blast against nearby enemies. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसको बाद में ट्राई करेंगे. ठीक है. और कोई है यहाँ पे? वैसे मिमिर में भी अलग ही लेवल का दिमाग है. उसने सब पता कर लिया एकदम से कि मतलब बहुत सही गैस कर लिया I wonder if एट्रियस ने Sindri जो will किया ever था. come back. Can this place ever feel like a home after what happened here? I never thought I'd miss their bickering. But it's really not the same place without those two, is it? We will maintain it until his return. ठीक है, निकलते हैं बाहर और देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं. अब हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा हमारे पास गोल्स क्या क्या है. A Viking funeral, the last remnants of Asgard, final Muspelheim, flowers, Berserker souls. सबसे पहले फ्लावर्स का काम करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या था? ये वाला था.
और कौन कौन से गेटवेज थे? बस एक ही है यहाँ पे, तो यहाँ चलते हैं। सैंक्चुरी ग्रोव, इसके अंदर एक फ्लावर है हमारा। We're heading back to Chaurli? Yes. He's not going to be very happy with me. No. ठीक है। Chaurli. I'm sorry, I have no excuse for neglecting you. I will do my best to earn it. Is someone inside? Yes. Warming up already, isn't it? Birgir, Hello. what are you doing here? Keeping warm. Both of us. It is your home if you wish me to leave. No. It's good that he has someone. Will you stay? There is still much to be done. Then we will wait. And when it is time to rest, I will keep the hearth warm. Thank you, Birgir. ओके सो हाँ ठीक है, एट्रियस एंगरबोडा की बात नहीं कर रहा था, वो चार्ली की बात कर रहा था। ये मेरी बेवकूफ़ी थी, मैंने जो अज्यूम किया। यहाँ नहीं जा सकते हम। अब देखते हैं फ्लावर कहाँ मिलेगा हमें। A flower. Mirkweed. ठीक है, ये वाला हो चुका। अब वापस चलते हैं, यहाँ और कुछ नहीं है मैप के हिसाब से। ठीक है, मिडगार्ड ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। Goodbye, Chaurli. Soon. एक एक करके सभी चीज़ों को करेंगे। ये क्या हुआ? ओ यूटनहाइम। अब यहाँ चलते हैं और हमें जाना है, मेरे ख्याल से एंगरबोडा के पास जाना पड़ेगा हमें। Ah, if I had a stomach, it'd be twisting right now. Odin is gone. There's no remaining threat. No, it's from excitement. Hardly any non-giants have gotten the great privilege of visiting the realm of the Jotnar. It's truly an honor to be among a very select few. So this is Jotunheim. As beautiful as the stories. And then some. यहाँ पे हमें एंगरबोडा मिलेगी क्या? बोरी। Company's here, Fen. Angrboda, Kratos, Mimir, Freya. It's good to see you. I wish to thank you for creating a path out of Asgard for us. Aye, a true pleasure to meet the lassie who saved our skins. Indeed. Your giant stuff magic is truly a marvel. We were so glad we got there in time. Freya, your brother's sacrifice won't be forgotten. It won't. I will say, you'd made quite the impression on our Atreus' heart. Mimir, Oh, like you weren't thinking it, brother. Ahem. You're a cherished ally, Angrboda. I hope we cross paths again. I imagine we will. There's lots to do, and I'm just getting started. ठीक है, Fenrir.
ठीक है, अब हमें Kratos, the last time you were here was because of Faye, right? You saw this in prophecy. Your son told me. It's a beautiful place to rest. It is what she wished. ठीक है, और कुछ लगता तो नहीं। फ्लावर कहाँ पे मिलेगा हमें, लेकिन आसपास ही होना चाहिए। Angrboda, you are the last giant left in Jotunheim. No, actually. My grandmother, Gryla. She's, not really one for visitors, but she's still here. She's helping me forage at the moment. After all you've done, lass, she must be so proud to have a granddaughter such as yourself. She might be. Someday. I don't know quite yet, but I think it's a start. ठीक है, और यहाँ कुछ प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं क्या? यहाँ पीछे, यहाँ कुछ नहीं है। इस साइड चलते हैं। Freya, something is on your mind. What is it? Freyr's sword. I'm glad he got it back. Odin stole it? Not quite. It couldn't be stolen. It had to be given freely. Freyr had it forged in his younger days, imbued with its own motives and passion. For centuries, he swore he would only ever set it down in death or upon meeting the love of his life. Both he and the sword were romantics, you see. The flower. Incredible. ठीक है, अब चलते हैं एसगार्ड। अगर हम देखें, ये भी हो चुका है। हम 9 में से 2 रैम्स पूरे कर चुके हैं 100%। फिर अब हम चलते हैं बाकियों पे। और कुछ बातचीत नहीं। ठीक है, और एसगार्ड अब ख़त्म हो चुका है। एक सेकेंड, अगर एसगार्ड ख़त्म हो गया तो हमें उसको रैम का वो कैसे मिलेगा? मेरे ख्याल से हमें रेमनेंट्स ऑफ एसगार्ड के अंदर आखिरी सोल फुल मिलेगा शायद। अगर हम देखें, एसगार्ड है ही नहीं अब सिंड्रीज हाउस के अंदर। वर्ल्ड ओवरव्यू में एसगार्ड ख़त्म हो चुका है। एसगार्ड नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, अब हम आ चुके हैं निफलहाइम में। अब निफलहाइम में क्या क्या चीज़ें बची है? एक्चुअली काफ़ी चीज़ें बची है। ठीक है, सो हाँ, यहाँ से आगे बढ़ना है। Protect yourself! ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इस साइड मेन तो मुझे चेक करना है यहाँ कोई फूल वगैरह है क्या। हाँ यहीं से आगे बढ़ना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर होगा कुछ भी तो यहीं पे होगा। अजीब है फूल यहाँ पे नहीं है, या फिर हम फूल ले चुके पहले ही। नहीं फूल तो नहीं लिया हमने। कोई और रास्ता? एक सेकेंड रुको। ठीक है तो इसके हिसाब से एक रास्ता यहाँ से ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्सेस नहीं है। खैर जो भी हो पहले इसको ट्राई करते हैं एक बार। भाई ये क्या हुआ? मेरी हेल्थ कैसे खत्म हो गई एकदम से? अच्छा इसकी वजह से हुई। ठीक है एक और ट्राई करते हैं फिर बाकी जगह जाएंगे। ये कैसे हो रहा है? ये देखो एकदम से बाईपास कैसे है ये? रुको बाद में करेंगे इसका, बाकी सारे रन चेक करते हैं पहले। इसके लिए ना वैसे ही सारी स्पेसिफिक एक वीडियो बनेगी जिसका सारा का सारा ये काम होगा। इतने आगे चलते हैं, लेकिन मुझे वही समझ में नहीं आया कि कहाँ पर है फिर वो। मे बी यहाँ पे रास्ता है वो वाला, हो सकता है। यहाँ पे अनडिस्कवर्ड है तो मिस्ट फील्ड्स के अंदर ही है। ठीक है दोबारा चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहीं कहीं निकलेगा। फ्लावर यहीं कहीं है। Do you hear that? Someone's crying. Sinmara. Ah, Sutter's love. Should we try to tell her what happened? She knows. ठीक है तो सिनमारा का है वो सीन। कुछ कर सकते हैं उस बारे में? रुको एक सेकेंड। You know, back in Jotunheim, I had half a mind to ask Angrboda what exactly her intentions were with the lad. But
But one look at her and any doubts I had melted away. It's a question every parent must grapple with sooner or later. I trusted her with my life. I trust her with my son. You can't argue with that. अच्छा यहीं पर था। Look. I did not think anything grew here. क्या हम सिनेमा से बातचीत कर सकते हैं? लगता है नहीं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। To Vanaheim, then. Sounded like Lady Sif managed to convince the old boar to shelter the Aesir refugees. It was his idea. Oh? To foster peace among the Vanir and Aesir. That's brilliant. Shifty bastard must be trying to prove he can out-diplomat me. At least he's not convincing her to marry someone, like some other diplomats would. A deservedly low blow, Your Majesty. Anytime. ठीक है, यहाँ पे क्या है? अच्छा ठीक है, रुको। ठीक है। यहाँ भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाद में करेंगे इसको। आखिरी वाला देखते हैं कौन सा है। ठीक है, सो ये एक शॉर्टकट बन गया, ये बढ़िया है। उससे पहले मुझे एक चीज़ जाननी है मैप के हिसाब से। यहाँ पे रेमनेंट्स ऑफ एसगार्ड, वाइकिंग फ्यूनरल, ठीक है। वाइकिंग फ्यूनरल स्वॉर्ड सैंड्स के अंदर माना गया है। ठीक है, तो चलते पहले इस वाले को करते हैं। मैंने गड़बड़ कर दी, हमें ये नहीं करना चाहिए था। अभी आधा घंटा लगाएगा करने में। एक काम करते हैं, लोड करते हैं स्वाटलफाइम। ठीक है, और मैप के हिसाब से हमें जाना है यहाँ पे जाना है। तो वाइकिंग फ्यूनरल यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है स्वॉर्ड सैंड्स के अंदर, अगर हमें जाना यहाँ पर है तो ये अजीब है। खैर जो भी हो, चलते इधर वाइकिंग फ्यूनरल अटेंड करते हैं।
एक सेकंड मार्क कर लेते पहले गोल्स के अंदर। एक सेकंड, ये क्या है? बियॉन्ड रैग्नारॉक। ओके। अटेंड द फ्यूनरल। Profane alternate lyrics to my ballads. Absolutely disgusting. But now I wish I could remember some of them. The paperwork that man created for me. I had to build a chest just for his violations. A big one. I taught him 20 different ways to cold forge a bolster. Once, he taught me a slightly easier method of wire pulling, and from that day on called me his apprentice. A true asshole he was. Gods, I'm gonna miss him. Hi! Y'all made it. Just about to send him off. I have met many on my travels. You are one of the few I would call friend. I always thought you were one of the dumbest creatures I'd ever met. Didn't expect you to be the bravest, too. This world is a darker place for your leaving it. We're taking him to the Sphaired Sands. It's, in the wetlands near the ferry. We'll wait for you there. अब समझ में आया क्यों। ठीक है, चलते हैं। हम भी अलविदा कहते थे, अलविदा ब्रॉक। याद आएगी। काश क्रेटस ने तुम्हें आग की तरह इस्तेमाल नहीं किया होता रैग्नारॉक के लिए। काश। ठीक है, चलते आगे। धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाने से तो अच्छा है इसका इस्तेमाल कर लो। Damn it. What is wrong? I should have changed. Sewn some mourning garb. We're not dressed properly. We're fine. Dwarves don't typically require formal wear at funerals. Brok certainly would not. Perhaps. Still, now you've got me thinking of what I might look like with some jewellery around my neck stump. Maybe some gold woven into my beard. Be quite fetching, eh? Thanks for trying. ठीक है। There they are, brother. Oh, come on, surely he'll be along. It's his brother. Let's hope so. Loss can do things to a man. You made it. We can begin.
love you, Brok. Sindri. Brok was... A hole. What? Gets bigger the more you take away. तो ये हिडन एंडिंग थी, ये हिडन एंडिंग थी। ये हिडन एंडिंग थी। I don't know if there's anything beyond the light. Afterlives after afterlives or whatever you. But if there is, I imagine he's causing one crazy ruckus there. I wrote that dirge for him. What's it called? Something profane. He wouldn't have it any other way. Forgive Sindri. He's just, I mean, you know. ठीक है, इसी के साथ हम गुड बाय करते हैं ब्रॉक को। याद आएगी। चलते फिर हम। यहाँ पे एक्चुअली एक ड्रैगन और है जिससे हम लड़ सकते हैं, तो हम उससे लड़ेंगे।
ठीक है, सो लोकेशन है ड्रैगन की, ड्रैगन आइलैंड, ड्रैगन ब्रेथ या फिर जो भी नाम है, वहाँ पे जाने में। Near the little shop I'm running out in the Alpine desert, there's something y'all are probably gonna see. Hello, Lunda. Hey, goddess. About your brother. I never got the chance to tell you. I know moments like this you're supposed to say sorry and whatnot, but I always known that pretty man had greatness in him. That he'd do something amazing one day, and I'm just... You know, I'm proud that now the 9 realms know it too. I thank you. Anytime, ma'am. Lunda. Hi there. I wanted to ask, do you want me to stop talking about your muscles and how you look and stuff? Because it seems like it's making you all wiggly, like in a bad way. It did, but no longer. Oh, okay. So I should stop? Sounds like I should stop. No. Oh, all right, handsome. You beefcake? ओके, अब चलते हैं इस साइड पे। ये एक्चुअली मुझे गलती से पता चला था, लेकिन ये काफ़ी, जिसने भी सोचा ये हैट्स ऑफ है। दिखाता हूँ तुम्हें। Yeah. You may tell a story if you wish. Am I preferable to silence at last? A rare day. I'm touched. But since you mention it, there has been one on my mind of late. It goes back to my earliest days, when I had little more to do than observe the mortals who passed through our forest. One summer, a local laird of renowned eccentricity chose to sequester himself with a small coterie of kinsmen and followers. The aim of their woodland retreat was to achieve enlightenment through study and discipline. They took oaths to brook no distractions until they became wise men. Distractions. Aye, women, drink, mostly women. As you can imagine, things deteriorated quickly. By autumn, tempers were frayed and wisdom remained in short supply. One day, I watched as the laird and his brother took their hunt. There they found, at the banks of a river, a lady as fair as any they'd left behind. She pleads for their assistance for fear the currents would carry her off if she tried to cross. The laird doesn't miss a beat. He hoists her onto his shoulders, carries her across, sets her down, doffs his cap, and fords back across to his brother, who is dumbfounded, can't even bring himself to speak. The day stretches on, the laird carries on hunting, and his brother quietly gnashes his teeth down to powder. Finally, the dam breaks. "Brother," he cries, "how could you do it after everything we've sacrificed? How could you break your vow like it was nothing, carrying that lass on your shoulders like you were a Shetland pony?" The laird just smiles. "Brother, I set that lass down across the river. 'Tis you that carries her still." Oh, I got a chuckle. A rare day indeed. ठीक है, सो अभी हमें करना होगा इसको रेलिक्स पे जाने में, और सबसे ऊपर था हमारा, नहीं, ये मिस्टिकल हेल रूम। और यहाँ पे ये जो स्टैचू है, ये असल में एक ड्रैगन है। जिसने भी सोचा, मतलब जबरदस्त सोचा। अगर मैं सही है तो यही वाला स्टैचू है जो ड्रैगन है हमारा। ट्राई करते हैं। हाँ, दी एवरलास्टिंग।
बाय फ्रॉस्ट। ओह नाइस। कहाँ है? आजा। Incoming behind you, brother! कोई बात नहीं। अरे 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 नाइस। अब That was quite a surprise. What did you expect? That's a fair point. Anyone else notice the dragon broke free right after you used that one relic we pilfered? I smell a connection. ठीक है, अब एक बार ऊपर, एक सेकंड को, अभी हमारे पास 15 मिनट है, जल्दी से एक ऊपर चल के चेक करते हैं ऊपर क्या है। ये ऊपर मुझे कुछ दिख रहा है, शायद से ये रेमनेंट ऑफ एसगार्ड है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखते हैं ये क्या है। Your master is no more. Be at peace. Have it your way then. बायफ्रॉस्ट स्टॉर्म। अरे मैं भूल गया। Careful, brother. You're covered in Bifrost. खत्म। Well, if there's more of these Asgard fragments out there, the Einherjar will continue to be a nuisance for the realms. Only if we do nothing. The realms will never heal if they remain. How many more? Only one way to find out. ठीक है, 10 में से 1 कर चुके हम। अब हम चलते हैं। अब वो तो ठीक है, एमुलेट्स चेंज करते हैं। रुको, कुछ अलग आया है। अरे वो छोड़ो, पहले मुझे रैलिक चेंज करना है। अब ठीक है, और अगर हम मैप पे देखें, अब स्वाटलफाइन के अंदर 2 बर्सर्कर ग्रेवस्टोन और 2 रेमनेंट्स ऑफ एसगार्ड बचे हैं, जो हम करेंगे बाद में स्पेशल वीडियोस के अंदर। हार्डन रेमनेंट्स।
Freya, you spoke of your brother's sword. How did Odin acquire it? I'll answer this one. Odin disguised himself as the most beautiful person Freya had ever seen. This separated Freya from his sword. Oh, with embarrassing speed. I am glad Freya ultimately retrieved it. Me too. My little ठीक है, अब आखिरी के 2 वो करते हैं फ्लावर्स का काम इस वीडियो के अंदर, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। और फाइनल चैलेंजेस फॉर द किंग, एक है एसगार्ड के अंदर और एक है वेनाहाइम के अंदर। ठीक है, अब 1 सेकंड रुको, मैं इसे चेक करता हूँ कहाँ पे है दोनों के दोनों। ठीक है, मुझे वेनाहाइम का पता चल चुका है और एसगार्ड वाले का भी पता चल चुका है। हमें जाना है 10 सिंक होल के अंदर, इस वाले पे। To the crater then. We have leftover business to attend to. Bound to be even more dangerous beasties with valuable resources. Sounds like a plan. We go. ठीक है, सो यहीं कहीं था, शायद वहाँ सामने था। रुको 1 सेकंड, उस साइड। नहीं, या फिर इस साइड पे। रुको, यहाँ से आगे जाना है, यहीं कहीं दिखेगा। चेक करते हैं, निकलेगा तो यहीं कहीं। ये अजीब है, कहाँ गया? ओ, वो रह गया हमारा एक। हाय, पूरा घूम के जाओ। तब बी फ्लावर कहाँ गया? मैं भी यहाँ पीछे, ये रहा। Starblush. अब आखिरी वाले पे चलते हैं, वो उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। कोशिश करते हैं इस वीडियो में पहुंच जाए। 5 मिनट हमारे पास सिर्फ। निफलहाइम के जो मैं कहता ना कि जहाँ पे एरिना है वहाँ पे 3 जगह लग रही है मुझे कि हाँ यहाँ कुछ है, वहाँ पे है। वो असल में प्रिजन्स है एक्चुअली, तो वो देखते हैं, उनका एक्सेस मिलेगा अब हमें।
found a stone dragon. Did you now? And did you kill it? Yes. Of course you did. तो ये हम खोल सकते हैं शायद, ये अभी नहीं खुला है, खुलना चाहिए था ये। एक सेकेंड रुको, लेफ्ट ऑफ दी रेवन ट्री रीजन, ठीक है, हम इस जगह नहीं आएंगे, यहाँ से। Aha! Another fallen piece of Asgard. Something seems a bit different about this one. Different? Dunno. I've just a funny feeling. Your analytical mind knows no bounds. The Broken Prison, इसको ना अगली वीडियो में करेंगे। तो यार तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बढ़िया कंटेंट डालता रहूँगा अपने चैनल पे, तुम भी उन्हें ज़रूर चेकआउट करना। और बाय चांस अगर तुम्हें मेरा चैनल पसंद आए तो उसको जगह शेयर करो। तो यार हर जगह मेरे चैनल को शेयर करो और उसको आग की तरफ फैला दो। तब तक के लिए इतना ही। सायोनारा।